300 million years. Understood? That is Paleozoic era. Yes, which era? Paleozoic era. Paleozoic era. And if I talked about, it never means that it is southern India. Dravidian rock system, it never means it is, I said that. So it is available in which I said that? It is that I said that rock system or deposition of sediments and which has converted into different kind of structure in the Himalayas. So ये कहाँ पर है? In northern India. In northern India, if I am talking about first Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर रीजन में जाएंगे तो पहला है आपका पीर पंजाल रेंज में जो रॉक सिस्टम जो अंदर है उसके अंदर वो कब का है? ऐसे बहुत पहले से भी रहा है वहां पर और डिपोजिट बाद में भी धीरे धीरे. सो इट इज एन पीर पंजाल विच वन आई सेड दैट. एंड पीर पंजाल के पास ही पहलगांव से लेकर अमरनाथ क्या अमरनाथ दैट इज लिड्डर वैली विच वन आई सेड दैट. Liddar Valley, Jammu and Kashmir. So this region is belongs to Dravidian rock system. Now next one is Himachal Pradesh. Himachal Pradesh में if you come, there is some regions are there. I said if you see here, there is Kangra, Chamba. Which one I said that? Kangra, Chamba, Manali, and there is a Shimla. This region is under the, I said that, Dravidian rock system. Which one I said that? और साथ में यहाँ पे लाहौल एंड स्पीति वैली. कौन सा वैली है? Understood? So which are that comes under हिमाचल प्रदेश में? Yes. कांगड़ा, चंबा. ये कंगना रनावत और चंपा दो लड़की हैं. कांगड़ा, चंबा. और कहाँ घूमने गई हैं? कुल्लू मनाली एक गई और दूसरी गई शिमला. एंड वहां पर ऊपर में क्या देख रहे हैं? स्पीति वैली, लाहौल स्पीति वैली. सो विच आर इन द एचपी? कांगड़ा, चंबा, मनाली. बेटर टू राइट ओनली कुल्लू. इट कम्स अंडर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट. कुल्लू. देन क्या मैंने बोला? शिमला. Yes. Lahore, Spiti. Understood? Understood? It is coming under which? Dravidian rock system. And thereafter I said that this is known as Garhwal and this is known as Kumaon. So this is completely part of what I said, that is the base में the rock is of what? Dravidian rock system. So in the Uttarakhand, I said that Garhwal, western part is Garhwal, जहाँ पे टेरी Garhwal, and which one I said that? Kumaon. Understood? So this region is coming under which rock system? Dravidian rock system. Completely याद हो गया? So I said that here we have a large, और ये इसके अंदर कौन कौन सा period आएगा? Which period will come? First I said कौन सा आएगा? Cambrian, Ordovician, yes, Silurian, Devonian. थोड़ा कार्बोनिफेरस तक जाएंगे क्योंकि कार्बोनिफेरस पर्मियन ये उसमें नहीं आएगा. अंडरस्टूड? सो पैलियोज़ोइक एरा का ये लास्ट टू पीरियड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ ड्राविडियन रॉक सिस्टम. जनरली लोग बोलते हैं होल पैलियोज़ोइक एरा.
लेकिन आपको क्या बोला 300 तक, बट इट गोज टिल 250. Yes, clear? So this is your Dravidian rock system. Here we can be able to see concept Pir Panjab. Then here we can be able to see which one? Pir Panjab, Lidder Valley, and then here Kangra, Chamba, Kullu, then Shimla. So it is Kangra, Chamba, Kullu, Shimla, and this is in Spiti Valley, and this region is what I said, Garhwal, and this is what? Kumaon. Understood? So here we have, and then in the northeast, and northeast. So which are the period which is covering under the Dravidian rock system? Not all the 6 of Paleozoic, 4. Which are, I said that? Which are the 4? Cambrian, Ordovician, and then Silurian, and then Devonian. Understood? Shall I? इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ न कुछ माउंटेन टाइप का पहले बना हुआ था. Yes, in this region something which is right now Himalaya we are able to see, इसके पहले कुछ structure था which is formed several years back. Okay? Shall I remove now? त्रिवेणी के बाद हमारा जो आएगा गोंडवाना सिस्टम, गोंडवाना रॉक सिस्टम, गोंडवाना कोल. अंडरस्टूड? एंड गोंडवाना सिस्टम कहने का मतलब है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट Gondwana system, if I am talking about, it means simply, I said that Permo-Carboniferous. Permo-Carboniferous. मुझे इसका मतलब समझाएंगे आप? What is the meaning of it? Yes, what is the meaning of Permo-Carboniferous?